विनियोगः ओम शिव शिव मुक्तिस्कंद भूतविशाखा सर्वे देवविभारकाः शंभोराग्नेया प्रवर्धमानस्य अद्य ब्राह्मणः द्वितीय परार्थे श्वेतवराह कल्पे वैवस्वतवरवन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बोद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे मेरोर्दक्षिणदिग्भागे श्रीशैलस्य महाक्षेत्रस्य भर्तीपुर श्री दत्तगिरि पुण्य आश्रम सन्निधानेन एवं गुणदाद्वैतस्यानां क्रोधेनाम संवत्सरे उत्तराजरे शिशिर ऋतौ कार्तीक मासे अध्यम्यायाम् अस्य षष्ठम्यायाम् आश्लेषा नक्षत्रे शुभयोगे वासरस्तु वासराणां मध्येयां स्थिरवासरयुक्तायां लक्ष्मीवासरयुक्तायां मध्याह्नकालेन द्वादश ज्योतिर्लिंग दर्शन भाग्येन पंचामृत विशेष अभिषेकेन एवं गुण विशेषण विशिष्टायां अस्यां शुभतिथौ अस्य जमान्यः गोत्रोद्भवस्य कंचर्ल गोत्रोद्भवाय माधवनेरि वंशोद्भवस्य रघुनंदन राव नामधेयस्य धर्मपत्नी मंजूला देवी नामधेयस्य सह कुटुंब सपरिवार समेताना यजमान्यः गोत्रोद्भवस्य अनुगुण गोत्रोद्भवस्य अंजरेड्डी नामधेयस्य धर्मपत्नी गोदावरी नामधेयः अनीश रेड्डी नामधेयस्य सह कुटुंब सपरिवार समेतानाम् अस्माकं सह कुटुंबानां क्षेम स्थैर्य धैर्य विजय अभय आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं मम जन्म जन्मांतर सर्व शिव सायुज्य प्रीत्यर्थं द्वादश ज्योतिर्लिंग देवता पवित्र कार्तीक मास दर्शन भाग्येन मम सर्वदा अनुग्रह सिद्ध्यर्थं दाम्पत्य पुत्र पौत्र अभिवृद्ध्यर्थं वंश अभिवृद्ध्यर्थं मम राजकीयता अत्युन्नत स्थानेन फल सिद्ध्यर्थं सर्व अंतर्गत बहिर्गत सकल शत्रु विनाशन अर्थं द्वादश ज्योतिर्लिंग देवता पंचामृत अभिषेक पूजा भाग्येन सर्वदा हैंदव धर्म रक्षण परिरक्षण अर्थं सर्वदा द्वादश ज्योतिर्लिंग देवता अभिषेक पूजनेन अहं हर ओम हर 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 नमः सोमाय जरुद्राय नमस्तां राजकारुणाय नमः शिवाय वसुदेवाय नमः उग्राय देवाय देवताय देवताय नमः अमृत हरिये नमः शिवाय हरिये नमस्ताय नमः शंभवे नमः जामवे नमः शिवाय वैष्णवाय नमः शिवाय सुभद्राय नमः अयष्टमे प्रियंजमे कामष्टमे कामष्टमे सोमनसष्टमे भद्रंजमे श्रेयस्समे वसष्टमे यदष्टमे भगष्टमे जगदष्टमे यत्तादमे लतादमे क्षेमष्टमे तुदिष्टमे विश्वंचा महष्टमे संविष्टमे ज्ञात्रंजमे सोष्टमे प्रसोष्टमे श्रीरंजमे लयक्षमरुदंजमे रुदंजमे ईश्वंजमे रायजमे देवादष्टमे दीर्घायुष्मंजमे नविक्रंजमे वैंजमे दुर्गंजमे जयरंजमे उद्यालमे सदेनंजमे एकादमे विश्वष्टमे पंचदमे सप्तदमे नवदमे एकादशदमे त्रयोदशदमे पंचदशदमे सप्तदशदमे नवदशदमे एकविंशतिदशदमे त्रयोविंशतिदशदमे पंचविंशतिदशदमे सप्तविंशतिदशदमे नवविंशतिदशदमे एकत्रिंशतिदशदमे त्रयस्त्रिंशच्च एतदस्त्रष्टमे षोडशमे द्वादशदमे षोडशदमे विंशतिदशदमे चतुर्विंशतिदशदमे अष्टाविंशतिदशदमे द्वाविंशतिदशदमे षट्विंशतिदशमे चत्वारिंशतिदशमे चतुश्चत्वारिंशतिदशमे चत्वारिंशतिदशमे द्वादश प्रथमश्च
सद्योजातं प्रपद्यामि सद्योजाताय वै नमो नमः रामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमो श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलिकरणाय नमः कलिकरणाय नमः अमराय नमः बलप्रमदाय नमः सर्वभूतनाय नमः अनन्ताय नमः अघोरेभ्यो तघोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते सर्वसर्वेभ्यः दोषाय विद्महे महादेवाय धीमहि ईशान सर्वविद्यानामीश्वर सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मणोऽधिपति ब्रह्म ब्रह्ममन्त्रेण शुद्धोदकेन स्नापयामि ॐ निधनपतये नमः ॐ निधनपतान्तिकाय नमः ॐ ऊर्ध्वाय नमः ॐ पूर्णलिङ्गाय नमः ॐ हिरण्याय नमः ॐ हिरण्यलिङ्गाय नमः शिवाय नमः ॐ शिवलिङ्गाय नमः स्वर्णाय नमः ॐ स्वर्णलिङ्गाय नमः मनोयाय नमः ॐ सर्ववेदाय नमः श्रीमहाद्वादशज्योतिर्लिङ्गदेवताभ्यो नमो नमः विशेष पञ्चामृतान् स्नानं समर्पयामि आपोजिष्ठावयो भुवस्तानमूर्तिरदाधनः शिवतमोरहस्तस्य भाजयते हनः रङ्घमामुवो यस्य क्षयाय जन्मदास्नानं समर्पयामि अनादिशाश्वतं शान्तं चैतन्यं चित्स्वरूपकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् द्वादशज्योतिर्लिङ्गदेवताभ्यो नमो नमः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि भस्मपरिकल्पयामि दिव्यः परिकरगन्धान्धारयामि रुद्राभूमचूर्णां समर्पयामि नानाविधपरिमलपत्रपुष्पान् समर्पयामि सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्धेः पुन्नागजाजकरवेरसारपुष्पैः बिल्वप्रबालाभुषमिदर्मादिकाभिः काम्बूज योबां पुष्पं वेधा पुष्पवान् भवति मावापां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पुष्पवान् भवति एवं वेदा योबामायतनं वेधा आयतनवान् भवति अग्निर्वा अपामायतनं आयतनवान् भवति अग्निरायतनं वेधा आयतनवान् भवति आपो वै अग्निरायतनं आयतनवान् भवति एवं वेदा योबामायतनं वेधा पर्जन्यो वा अपामायतनो आयतनवान् भवति यः पर्जन्यस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै पर्जन्यस्यायतनो आयतनवान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति नक्षत्राणि वा अपामायतनो आयतनवान् भवति यो नक्षत्राणामायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै नक्षत्राणामायतनो आयतनवान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति संवत्सरो वा अपामायतनो आयतनवान् भवति संवत्सरस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै संवत्सरस्यायतनो आयतनवान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्धेः पुन्नागजाजिकरवीररसारपुष्पैः पुन्नागजाजिकरवीररसारपुष्पैः बिल्वप्रवालासुषमिदलमालिकाभिः वाम्बोदयामि जगदेश्वरमे प्रसीदायवरसम्भूतं नानागुणसमन्वितम् आनन्दसौरभं पुष्पं ग्रहणामि नमोत्तमम् वनस्पतिर्सोमेनो विधान्यो दोमोत्तमः